है और इनका कृष्ण नाम कहिले रे कृष्ण। ये था विवरण आकाशवाणी शिमला से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी शिमला से अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग हिमाचल। कृष्ण मेरे साथ हैं आप। वैसे तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और आजकल पीजीआई में स्वास्थ्य के डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, घुटने बदलने के लिए नौबत कब आती है? मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि घुटना बदलना एक विकल्प है। बेसिक समझ to maybe leave it to the workers themselves to is what we as the boss or the managers of the company have decided you have to do this. So leave it to the workers to decide and just plan it out. If they have to vote, they vote on it, that kind of thing. Yeah. سرفراز یکی دیگر از قربانیان ناپدید شدنهای اجباری توسط نهادهای دولتی است. عبدالرحمن برادر سرفراز میگوید کودک 4 ماهش 10 ساله شد.